So here we go for the next chapter. Probability is the name of the chapter. यहाँ पे if we look at the टेक्स्ट बुक हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पे पहला मेंबर और लास्ट का मेंबर दे विल हैव एन ओपिनियन कि भाई उनका प्रॉब्लम हो जाएगा. द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द चीट विद द नेम बेसिल इज वेरी लो, ऐसा वो बोलेंगे. नाउ विल रीड सम ऑफ द स्टेटमेंट्स हियर. कुछ स्टेटमेंट्स की अगर बात करें, लेट्स से दिस, इफ आई विल बी रीडिंग, we use the following words to express the possibility in our day-to-day conversation. Probable, sure, maybe, nearly, impossible, 50-50, almost. तो ऐसे कुछ शब्द हम यूज करते हैं हमारे हर रोज की परिभाषा में, isn't it? Read the following statements regarding the predictions. पहला है most probably the rain will start from today. Most probably. दूसरा, द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, मतलब दे आर नॉट श्योर अबाउट इट बट इट इज लाइक आइदर इट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन. इस तरह के ये स्टेटमेंट्स है. इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच. इम्पॉसिबल. आई श्योरली गेट द फर्स्ट क्लास. श्योर, 100%. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ अ चाइल्ड इज गिवन अ पोलियो वैक्सीन इन टाइम. So these are the possibilities which are, mentioned over here. I'll go to the next page. Yeah. The adjoining picture shows a toss before a cricket team. What are the possibilities? तो लिख लीजिए वहाँ पे. Either it is head or it is tail. So here are how many possibilities? Either head or a tail. Two possibilities are there. करेक्ट ना? ठीक है. सो अब एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे जो दिया गया है. Let each student in the class toss a coin. What will you get? A teacher writes observation in the board. तो कितने लोगों का हेड आया, कितने लोगों का टेल आया, ये भी लिखा जा सकता है. Ask each student to toss the same coin twice. अब उसके क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, HH, HT, TH एंड TT. ठीक है, दिस आर द पॉसिबिलिटीज वी डिस्कस हियर. ठीक है. नाउ थ्रो अ डाई, इसको डाई बोलते हैं. ओके. सो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज हियर, राइट. देयर आर, ईच ऑफ दिस इज द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग द डाई. एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 या 5 या 6 कुछ भी आ सकता है. करेक्ट ना? तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे.
नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम कुछ भी आ सकता है उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, throwing a die, picking a card from the set of cards bearing number 1 to 50, picking a card from a pack of well shuffled playing cards। तो ये सब यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो दिए हैं, वी कॉल देम एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका पॉसिबिलिटी कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटकम, अब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या आएगा वो देखेंगे। रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द आउटकम। इसको अंडरलाइन करते हैं हम लोग, रिजल्ट। Result of the random experiment is called as the outcome. In a random experiment of a tossing a coin, there are only two outcomes, either head or tail. In a random experiment of throwing a die, there are six outcomes, या तो 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. In a random experiment of picking a card bearing numbers from 1 to 50, there are 50 outcomes. कोई भी नंबर आ सकता है ना उसमें। A card is drawn randomly from the pack of well shuffled playing cards. There are 52 cards in all. उनमें से 26 कार्ड्स रेड वाले होते हैं हार्ट के, एंड 26 कार्ड्स आई मीन 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के। ये 13 के हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 स्पेड, स्पीक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है, चौकट एंड ऑल, राइट ना। ठीक है, दिस इज द पॉसिबिलिटी वी सी इन द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का पैक यहाँ पे दिखाया गया है। एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब एंड एस ऑफ डायमंड्स, ये चार होते हैं। क्वीन, किंग, जैक आर king, queen, jack are known as the face cards. In each pack of cards there are 4 cards of king, 4 cards of queen and 4 cards of jack. Thus totally 12 face cards are there. कितने फेस कार्ड्स हैं? 12। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 ऑल आर हैविंग इक्वल पॉसिबिलिटी, समझेगा। सबका पॉसिबिलिटी सेम है, मतलब एक या भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सो वी से वी assume that the objects used for random experiments are fair and unbiased. A given number of outcomes are said to be equally likely if none of them occurs for sure. Equally likely outcomes। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। शुरू करते हैं, हमारे क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं।
क्या दिया है यहाँ पे? How many possibilities are there in each of the following? Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. अजंता, ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे. How many possible? Vanita knows following sites in Maharashtra. Total. There, how many possibilities are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 possibilities over there. So what can we say here? Vanita can visit any of the 8 places in Maharashtra. So 8 possibilities. दूसरा, क्या दिया है? Any day of a week is to be selected randomly. How many possibilities? 7 possibilities. Next. Select one card from the pack of 52 cards. 52 possibilities, right? Fifty-two possibilities. Next. One number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. कहाँ से कहाँ नंबर से? 10 to 20. कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? हाँ, कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? अरे भैया 10 भी तो इंक्लूडेड है. सो 10 से पकड़ के कितने हो गए? 11 पॉसिबिलिटीज ना. हेलो, 11 पॉसिबिलिटीज बराबर है क्या? नेक्स्ट एक्सरसाइज वी गो फॉर. ये लोग आ गए क्या? कोई ज्वाइन किया इन्होंने? अरे तुम्ही का नाही आले रे क्लासला? अगला शुरू करते हैं अब. What is meant by an event? If I talk about an event, in which of the following experiments possibility of expected outcome is more? Getting one on the upper face of die is thrown. Yes, it is possible. Getting hit by tossing the coin. Yeah. तो किसका पॉसिबिलिटी 50-50 है? या बराबर है क्या? तो व्हाट वी से है, क्योंकि यहाँ पर 2 आउटकम्स है, 6 आउटकम्स है. ठीक है, करेक्ट है. yes. आगे बढ़ते हैं. The set of all the possible outcomes. अंडरलाइन कर लो इसको. It's called as the sample space. Set of all the possible outcomes of a random experiment is called as the sample space. It is denoted by S or each element of the sample space is called sample point. The number of points in the set S is denoted by n of S.
Enough S is finite, then the sample space is said to be finite sample space. Following are the examples of sample space, finite sample space. यहाँ पर examples दिए गए हैं. Let's talk about this. One coin is tossed. So sample space is this. This is an event. H and T. कितने हैं total? 1 and 2. So what is the sample space? H, H, T, T, H and T, T. Possible कितना हो जाएगा? NS is equal to 4. लिखते हैं. क्या लिखना है यहाँ पे? 4. 3 coins tossed. Sample space is 8. H, 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 T. Correct ना? Next. A die is thrown. How many samples? 6. 2 dice are thrown. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 36. A card is drawn from the pack of 52 bearing numbers from 1 to 25. So it will be 25, no? Then a card is drawn. From the well shuffled pack of 52 cards, a card is drawn from the well shuffled pack of 52 playing cards. Diamond is. तो टोटल कितने? 52 पॉसिबिलिटी, 52 पॉसिबिलिटीज आते हैं. बराबर है क्या? 52. So what is the answer here? 52. ठीक है. अब हम शुरू करते हैं. Let us remember दूसरा एक्सरसाइज. ये वाला कर लेते हैं. ये एकदम छोटा सा एक्सरसाइज है. प्रैक्टिस सेट 5.2. For each of the following experiments, write the sample space S and number of sample points. One coin and one die are thrown simultaneously. एक coin और एक die throw किया है simultaneously. So we have to write down the sample space S. And उसके बाद हमें number of points in the sample space भी चाहिए. कॉइन के लिए क्या होता है? It can be H or S. And for die, so for coin and one die. क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस बताओ? नहीं, पहले कॉइन है ना. सो इट बी H1, H2, H5 and H6 ना. T1, T3, T5 and T6. So how many? This is S na. What is n of S is equal to 12. So ये
Next question. Two-digit numbers are formed using the digits 2, 3, and 5 without repeating. Two-digit numbers are formed using the digits. कैसे possible? Without repeating. So it can be पहले 2 लिया तो 23, 25, 32 and 35. So this is the sample space, and therefore what is n of s? Correct. Next. अगला question. क्या दिया? S is equal to red ऑरेंज के बाद येलो है ना? कितना है फिर ये टोटल? What is n of s? हाँ, green, purple. तो total n of s is 6. अगला क्वेश्चन. ये करना है. फिर तो in the month of March, find the days on which the date is multiple of 5. Sample space. S is equal to multiple of 5, 5, 10, n of s. सही है. Next. From a road safety committee of 2, from 2 boys, B1 and B2, and 2 girls, G1 and G2. Complete the following activity to write the sample space. Committee of 2 boys. Okay, B1, B2. Next. Committee of 2 girls. Committee of 1 by 1 girl.
सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? नहीं, कैसे 6 होगा? क्या क्या होगा यहाँ पर? B1 G1 G2। है ना? B1 G2, एक सेकंड, B1 G1 लिखना पड़ेगा पहले। तो B1 G2, B2 G1, B2 G2। सही है? These are the 6 possibilities। ठीक है, I'll go for the next part now। Event set of, लिखो यहाँ पर, favorable outcomes of the given sample space is called as event। Event is a subset of sample space। Set of favorable outcomes, we call this as the event। ठीक है? अब क्या करेंगे बताइए मुझे? अगला कुछ, अगला एक्सरसाइज चालू करें? थोड़ा ना दिया है तो एक्सरसाइज करो, बहुत मजा से होती है। 5.3 ये बढ़िया है, एक एक्सरसाइज का आधा कर लेते हैं। I'll go for the next exercise। Practice set 5.3। क्या दिया है यहाँ पे? Write the sample space S and the number of sample points NS in each of the following experiments। Also write events A, B, C in the set form and write NA, NB and C। One die is rolled। Very good। One die is rolled। Event A, even numbers on the upper face। Even numbers on the upper face। पहले तो मुझे ये बताइए, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? ठीक है, सो व्हाट इज NS? अब मैं इवेंट की बात करूंगा। इवेंट ए, इवेंट ए इज इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इवन नंबर, तो उसको मैं बोलूंगा इवेंट ए। सो हाउ इज दिस इवेंट ए गोइंग टू टेक प्लेस? 4 और 6। therefore what is n of a? Event B, odd number on upper face। I'll call this as event B, 1, 3 and 5। Correct? So what is n of B? 3। And what is event C? Prime number on the upper face। 3, 5। 1 is not a prime number। So what is n of C? 2। That's it। Easy है? अगला क्वेश्चन।
2 dice are rolled. Hmm. Hmm. 2 dice क्या होंगे बताओ? सैंपल स्पेस क्या होगा? पूरा भर दो ये, काउंट करो सबको, एन ऑफ एस कितना आएगा? 36 आएगा, काउंट कर लेना ना। अब इवेंट की बात करते हैं। सम मल्टीपल of 6, that is sum is 6 and sum is 12, करेक्ट ना? 6 या फिर 12 भी चलेगा। अब 6 कैसे हो सकता है बताइए? कैन इट बी 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1? और 12 सम कैसे आ सकता है? दिस इज सम 6। इट विल बी ओनली 6 and 6, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट ना? सो व्हाट इज एन ऑफ ए? 6, करेक्ट। आगे बोलो, इवेंट बी, सम is minimum is minimum 10. Sum is minimum 10, मतलब sum is 10 or 11 or 12, सही है? 10 और 11 और 12, ठीक है? तो दैट इज इक्वल टू, क्या क्या हो सकता है सम? 10 कब हो सकता है? 4 6 5 5 6 4, this is sum 10, 5 6 6 5, this is sum 11, 6 6, this is sum 12. What is n of b? 1 2 3 4 5 6, सही है? अब तीसरा है सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इवेंट सी, सेम डिजिट ऑन अपर फेसेस, that is 1 comma 1 2 2 3 3 4 4, therefore what is n of c? Is this okay? Doubts है? Okay, अगला, 3 coins are tossed simultaneously, अभी आप लिखो, बनाओ। Are you there?
ठीक है, आई विल स्टॉप हियर फॉर अलजेब्रा. दोज हु आर ऑनलाइन, मेक सम. दोनों भी आप लोग 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं ज्योमेट्री के लिए करूँगा. ठीक है, आई स्टॉप हियर स्ट्रीमिंग नाउ.